Good morning, everyone. So, I'll give a brief introduction of myself again. I'm from Pune and I work in IT, and I'm here just sharing some of the finance related information from my own experience. So, whether it is regarding investment or tax, or how I look at finance and money and all those things. So, I'll be just sharing my experience. Please use your own discretion when you are using this information. And I also will share some of my experiences based on, like, I worked with certain banks to develop their softwares. So whatever I've learned through all these experiences, I will be sharing that. And I would also like each and every one of you to share your questions, feedback, whatever you did after listening to last session. So I will love for you guys to share your, what changed after first session. So if you have any questions, you can ask those as well. Let's keep this session interactive. And this is not something that I usually do. So this is a new experience for me as well. And I'm myself very a little bit nervous and anxious doing this. So I have kept the audience a little limited this time, and I am hoping that whoever is participating is also equally interested in these sessions. So let's keep this interactive, and I would love to hear from some of you. If you went through last session, and if there is anything that you can share from that. Hi, Rimple. Hello. Yeah, hi. This is Anand. I'm also from Pune. Oh, great. I think we were talking about auto sweep last time, and in Right. fact, I was looking for this for quite some time. But Mhm. because of this discussion, I thought let's check this once again. But Mhm. I think looks like not all banks have this facility, because I Okay. checked with my bank, that is Standard Chartered Bank. Mhm. It doesn't have this facility. Okay. So it's quite a blocker, Um, I think. okay, because see, I have this facility since many years, and there were two ways how this facility worked when I checked. So one is you have a permanent setting. Like in my account, I have a permanent setting. Whatever amount I deposit in my account, अगर वो 10,000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट है, वो ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल एफडी बोलते हैं उसको, तो फ्लेक्सिबल एफडी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड जैसे ही Right. I मैं think वो you're अमाउंट talking about ICICI Bank, is it? yes, I'm talking about ICICI Right. Bank. So मैंने check किया And उनके साथ, then there but is a second. हाँ, yeah, हाँ. but looks like every bank And there is doesn't a, have this. so that's why I'm saying there is a second part to it. So if this is not available, this permanent setting, then the second option is that every time you deposit money, anything over and above 10,000. I know a few banks which definitely have, like HDFC and ICICI and few others, and we can check about these other banks as well, later on. But the second option is every time you deposit money, this option, in between I heard from somebody that this option was removed from many banks, because there is no advantage for banks. You get it, right? That bank आपको 3 या 4% amount interest देती है, which is good for them, right? Now they have to give you double, like 7% अगर FD का है तो उनको आपको 7% देना पड़ेगा. So why will they give, like, it's not a great option for them. So I heard that ये facility चली गई थी, तो every time you deposit money आपको खुद से जाके वो flexible FD वाला option enable करके वो FD बनाना पड़ता है. This was the second option that I had heard of. And I'm guessing कि होना चाहिए most of the bank, they are like NBA and non-banking financial institution का मुझे नहीं पता, पर banking institution should have this option. तो आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक किया क्या आपने ये ऑप्शन? मैंने मैनेजर से भी बात किया था, तो he said हाँ. we don't have this facility.
I'll tell you one thing. ये जितना भी information मैं share कर रही हूँ, even ICICI बैंक के मेरे जो relationship manager है, so I'm a privileged customer, or Citigold में I'm a Citibank में I'm a Citigold customer. So I have dedicated relationship manager जो पूरा सर्विस मुझे either over phone या वो खुद घर पे आके देते हैं. तो I've not been to banks, like very rarely, maybe once or twice in my entire, like all these years I've gone. तो उनको नहीं पता होता है बहुत बार ये चीजें. मैं उनको बताना पड़ता है मुझे कि दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी और दिस पर्टिकुलर सर्विस. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप उनके वेबसाइट पे चेक करो कि ये ऑप्शन है क्या, और इंटरनेट बैंकिंग में चेक करो. बहुत बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी आया है कि आई हैड टू टेल देम ये ऑप्शन आपके यहाँ पे विजिबल ही नहीं है, और वो कहीं पे तो बहुत हिडन होता है, एंड देन यू हैव टू सर्च एंड यूज दीस ऑप्शंस. सो जहाँ पे उनको फायदा होता है ना, वैसे वाले ऑप्शंस आर वेल अवेयर टू एवरीबडी. वो उनको पता होता है कि जहाँ उनका एडवांटेज है. जैसे एनपीएस के लिए आपको कोई आके नहीं बताएगा, ये स्वीप इन एफडी. सो ये जो कुछ फैसिलिटीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई भी आके नहीं बताएगा, और ये ऐसे ऑप्शन है जिसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, खुद ढूंढना पड़ता है. And that is exactly why I thought of taking this session, because even my friends in IT and otherwise, they were like, अरे ये नहीं है, मुझे तो ये नहीं मिला कभी. There were people who worked with banks for few years, or in finance, like मेरे company के जो finance division है उसमें there were some people who were working, and I had to tell them also कि ऐसा ऐसा टैक्स में ऑप्शन है which I should be able to avail, और या इन्वेस्टमेंट में which I should be able to avail, and उनको भी कभी कभी पता नहीं रहता है. So what we can do is, you can post such queries in the group, and we offline we can check on that, because अभी एक ही घंटा है तो हम अभी चेक तो नहीं कर पाएंगे, but yeah, we'll have to search this. ये आपको readily कोई मैनेजर या ये लोग Yeah, no, देंगे या true. कब. Because for this bank, it's not mandatory from RBI to give this facility. First of all, I think so. Therefore, not every bank has it. मैंने भी मेरे आरएम को घर पे बुलाया था. There is a priority banking with Standard Chartered Bank, और इनके तो वैसे भी कस्टमर बहुत कम होते हैं. ई सेट नहीं सर, Right. हमारे पास नहीं है, और वैसे भी इंटरनेट बैंकिंग पे मैंने देखा था तो वहां पर तो है ही नहीं. आई नो दिस फैसिलिटी बिकॉज मेरे सोसाइटी का भी मैं देखता था, तो वहां पर उनका हमारा अकाउंट था कॉस्मोस बैंक में, तो उन्होंने फ्लेक्सिबल एफडी दिया था उस टाइम पे. बट लुक नाउ Okay. इट्स शिफ्टेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, सो ना ही उन्होंने बताया ना हमने उनको पूछा. बट लुक्स लाइक नॉट एवरी बैंक हैज इट, सो इट वुड डिपेंड आई थिंक. आपका अगर बिजनेस अकाउंट है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा. दिस इज नहीं नहीं, ओनली माइन अवेलेबल इज फॉर नॉट अ सेविंग. बिजनेस अकाउंट, इट्स स्टैंडर्ड, Okay. इट्स अ करंट अकाउंट, सॉरी सेविंग्स अकाउंट, सैलरी Okay. अकाउंट. So we can definitely check on this a little bit later. But like I said, all this information is very subjective, and we'll obviously have to explore on our own a little further to find out more about it. But quite a few banks I am aware over the years जो ये facility देती थी for sure, or हाँ. maybe they changed the patterns or names, or how it is availed, but uh, I'm pretty much sure that I've been using it for a long time, so most of the banks should be giving it. Yeah. Great. So this session, I'm not like prepared, like a proper format or anything. I'm just taking it impromptu, and जो भी मेरा experience है, I'm just sharing that. So I hope it helps you guys. So NPS पे I'll share a little more information.
So as you can see, this is tier 1 का मेरे account का summary. So there are 4 options. The first one is equity, the second is corporate bonds, the third is government bonds, and fourth is real estate. So there are 4 categories available. अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको रिस्क लेने में कोई इश्यू नहीं है, so I've put maximum. So I've preferred a active choice. यहाँ पे लेफ्ट में active choice है. So अगर आपको खुद मैनेज करना है आपका अकाउंट, आप एक्टिव चॉइस में जा सकते हो. So I've first thing that I've selected is active choice because I want to manage my percentage, how I want to allocate it, and I don't want NPS to handle that. But that option is also there. अगर आप ऐसे सोचते हो कि okay, I want to take medium risk, तो वहाँ पे 50% इक्विटी एक्सपोजर वाला ऑप्शन है. अगर आप बोलते हो आप कंजर्वेटिव हो, तो कंजर्वेटिव में 25% इज इक्विटी एक्सपोज्ड. So ऐसे भी आप by default NPS can also manage your money for you, but I prefer doing it actively based on market circumstances and my own choices. So I've taken active choice option here. यहाँ पे 4 categories available है. So I feel this is a great option instead of investing into 4 different categories or 4 different options and managing it myself. I think it's a great option that NPS does this for me, and they don't actually charge anything significant for this. So this is how I am managing my percentage. So equity I've put maximum percentage, and then corporate and government bonds some minimum amount percentage, and real estate there is a cap of 5%. So I'm using that as well. So all these 4 options I have used. अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, इक्विटी में ज्यादा रखो. आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, ऑल यू हैव टू डू इज यहाँ पे जाओ और परसेंटेज चेंज कर दो. बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे शेयर्स में आप लेते या बेचते हो, या बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं, तो आपको चार्जेस भी लगते हैं, राइट. ट्रेडिंग के चार्जेस हैं, आपको खुद से एफर्ट डाल के वहां पे जाके सेल करना है. तो यहाँ पे एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन. आपको कुछ नहीं करना है, बस लॉग इन करो ऑनलाइन एंड जस्ट चेंज द परसेंटेज. आपको लगता है कि अभी मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, आप आपका इक्विटी एक्सपोजर एकदम मिनिमम कर दो एंड इंक्रीज एवरीथिंग, शिफ्ट एवरीथिंग टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. एंड आपको जो ट्रेडिशनली रिटर्न्स मिलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, वो आपको मिल जाएगा. So for me, I think this works really great. Since NPS account मैंने open किया है, a lot of significant portion of my money into NPS. But like we normally here don't put all your eggs in one basket. तो बहुत सारे options हैं. अगर आप ATC में देखोगे, तो I normally stick to what government supported investments are. तो PPF, Provident Fund, Voluntary Provident Fund, NSC, बहुत सारे options है. So I put some chunk of my money into those, but I put a lot of my money into this because I'm somebody who is willing to take risk. So यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये ऐसे ऑप्शन आता है जहाँ पे आप जाके बस कौन सी कंपनी का या किस टाइप के फंड में आपको कितना परसेंटेज डालना है, आपको बस ऑनलाइन जाना है, लॉग इन करना है. यू जस्ट हैव टू चेंज द परसेंटेज दैट वर्क्स फॉर यू एंड यू आर डन. सो इट्स प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहली बार अगर आप लॉग इन करते हो तो शायद आपको ढूंढना पड़ सकता है कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन है. But I think now everybody is tech savvy, especially after lockdown, and we are using all different types of apps and all different types of websites. So iska bhi app hai, NPS ka bhi, and there is a website as well, and it's a very very good and stable reliable option. So आप online सब कुछ manage कर सकते हो. There is not much that you have to maintain on your own. आप automated choices भी opt कर सकते हो, and if you do that, तो फिर आपको मैनेज भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, मे बी से 25% है, you don't have to go and change it manually every time. So it just works fantastic.
I don't think this is going to be visible. Otherwise मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी ग्रुप में. तो हियर आई वाज शोइंग कि अगर आप एक्टिव चॉइस नहीं लेते हो तो मे बी आई विल शो इट अ लिटिल लेटर. सो अगर आप एक्टिव चॉइस नहीं लेना चाहते हो तो उनके ऑटोमेटिक भी ऑप्शंस है, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव. आप वो ऑप्ट कर सकते हो एनपीएस के लिए. यहाँ पे दे हैव मल्टीपल बैंक्स जिनके फंड्स अवेलेबल है, तो आप किसी का भी ले सकते हो. आई प्रेफर आईसीआईसीआई, सो आई स्टक विद देम. But you can select any of these banks and invest in their funds. और इनके पूरे रिटर्न्स का हर मंथ मुझे स्टेटमेंट आता है जिसमें कितना मुझे इस महीने रिटर्न मिला, पिछले क्वार्टर में मिला, पिछले टिल डेट. अगर समझो मुझे 4 साल से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्या परसेंटेज रिटर्न है ओवरऑल ओवर दीज इयर्स, वो भी वहां पे विजिबल है. सो आपको ऑटोमेटिक एवरी मंथ स्टेटमेंट आता है. अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी एनपीएस लिया है और आपको स्टेटमेंट नहीं आता है तो आपके चॉइसेस जाके ऑनलाइन अपडेट कर दो. आपके जो भी ईमेल आईडीज और चॉइसेस है रिसीविंग स्टेटमेंट एंड ऑल, वो आप अपडेट कर सकते हो. आपको मंथली स्टेटमेंट आ जाएगा. आई गेट अ मंथली स्टेटमेंट एंड इट शोज वेयर आई एम. और जो भी ऑप्शंस मुझे चेंज करना है सब ऑनलाइन अवेलेबल है. आई कैन गो एंड सिलेक्ट एनी ऑफ दीज फंड्स. अगर आपको लगता है कि आई हैड सिलेक्टेड एचडीएफसी बट एचडीएफसी से ज्यादा रिटर्न बेटर है एलआईसी में या एक्सिस में, तो यू कैन सिलेक्ट दैट आल्सो. सबका ऑनलाइन आपको यू कैन सी क्या रिटर्न आ रहा है हर एक का. एंड विच एवर यू थिंक इज बेस्ट फॉर योर चॉइसेस वो वाला आप ले सकते हो. ऐसा हो सकता है कि मे बी लाइक आईसीआईसीआई इज गिविंग बेटर रिटर्न्स फॉर इक्विटी वाला बट नॉट इन अदर एरियाज. तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे ज्यादा डालने हैं, तो वो एरिया में जिसका रिटर्न ज्यादा अच्छा है तो वहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन. फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, बट इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. So I will mention few of the options which I thought are not necessarily that people are much aware. So I'm just touching on those topics, hoping that uh, people. So I'll just mention in brief about these topics. So NPS, we can explore more if you people are interested. But I think in nutshell, I think it should be clear NPS क्या है. So अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो और आप चाहते हो कि ओके मेरे डिपेंडेंट्स जो भी है लाइक माय स्पाउस एंड माय चिल्ड्रन, they should get the benefit of the insurance policy. So that's not always the case. जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे आते हैं तो your wife and children are not always the first people to get the claim. अगर आपके लोन्स है, लाइबिलिटीज है, तो it goes in a particular sequence. So अगर आप चाहते हैं कि आपके इंश्योरेंस के पैसे पहले आपके वाइफ और बच्चों को मिले, then you can register the policy under MWP. And in that case, when the policy के पैसे आएंगे, that will be given to your wife and children, and they will be safeguarded. So your purpose of the policy, अगर आप चाहते हो कि ये they, to the your family should be taken care of, then in that case this is something that you should register your policy under. So yeah, they'll get the benefit of the policy. Otherwise it will go in a different sequence. First your liabilities will be cleared and then your family will get the money. So ये सारे details I can share in the group, or you can join the finance group that I had mentioned, and you'll get the details. So I'm not getting into like all the details.
If any of these options are that you are interested in, then you can check out the details. But in brief, I'm just like mentioning these options. But you have to know who are the beneficiaries when you're registering for this. When you're registering this policy under this MWP Act, you have to know who are the beneficiaries. A mutual fund is a pool of money managed by a professional fund manager for a common objective. तो अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, उस कैटेगरी के फंड में आप पैसे डाल सकते हो. So there are debt funds also, which invest into fixed government fixed income instruments such as corporate and government bonds, etc. तो आप डेट फंड्स में डाल सकते हो, आप इक्विटी एक्सपोज्ड वाले फंड्स में डाल सकते हो. सो म्यूचुअल फंड वो एज अ बंच बहुत सारे लोगों का मनी कलेक्ट करता है और इस पर्टिकुलर कॉमन गोल के लिए फंड बनाया होता है, वहां पे वो डाल देते हैं. दे चार्ज यू सम नॉमिनल फीस फॉर दैट. सो देयर इज अ of the money that you invest that goes to like 1%, 2% or something like that goes to the fund manager. And there are two types to invest into mutual funds. जब आप डीमेट अकाउंट के थ्रू या किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट फंड इज कॉल्ड एज रेगुलर फंड. एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जाके उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करो फ्रॉम देयर वेबसाइट. In that case, it's a direct fund. So direct में और regular में there is a bit of a difference in charges. Obviously बैंक के थ्रू जब आप जाते हो तो बैंक को भी थोड़ा सा परसेंटेज उसका जाता है. But then also you have the comfort of having all your mutual funds and investments under one umbrella. So based on your comfort आप वो select कर सकते हो. Now there are few new options for investments. So I'll just mention those as well. Senior citizens के लिए there is a saving schemes, and there's a significant amount of money which you can invest into it. You can there are no tax implications as such. So it's a good option if you have somebody senior citizen in your family. From this. Also, another option which is recently introduced is Mahila Sanman Savings Certificate. So, उसमें अभी there is no complete clarity कि क्या है, but it has a little bit better return than other options. So right now, उनका return is 0.5%. And compared to right now, अगर आप देखोगे FD वगैरह के रेट थोड़े से कम है, तो उस हिसाब से 7.5% is a little bit higher. So any of these options think are something that you want to opt for, then you can check it. As the name says, it's obviously for women, and the earlier one is for senior citizens. And there are quite a few options which are there for senior citizens and ladies, for investments. So you can explore those. Mutual fund में there are lots of categories. अगर आपको खुद को पसंद है shares trading या shares में direct investment, so you can do that. But otherwise you don't want to manage it on your own, then these are the good options. अगर आपको नहीं कुछ ज़्यादा है, तो normally blue chip shares are good options. Large cap and blue chip shares, these are stable companies who have proven themselves and have a reliable track record. So you can opt for those. Or otherwise, then you have different variety of options. So don't put your money into too many funds. Don't divide it too much. Select like maybe 3 or 4 or 5 funds which are really performing well and based on your risk appetite, and put into it.
don't diversify too much also. So don't put all your money in maybe 1 or 2 or 3x, but then don't make the basket too heavy as well by putting into 20 or 25 options. So keep few options, check out how well these funds are performing, and how much is your risk appetite, and based on that you can put your money. So we from time to time we check which are the funds which have been performing well, and we put it in that finance group. We put it as in Samir puts it in the finance group, the list of funds which are doing well, and you can check, do your research and put your money. Obviously there are tax saving funds as well. So अगर आपको टैक्स बचाना है तो वो भी उस हिसाब से भी you can look at those funds. So every year, or every couple of years, Samir puts the list of funds which are doing well, and you can just from time to time explore these and go for it. Take one step at a time, like we discussed. Kaizan में जैसे हमने बात किया था, take one step at a time, do that. Once you are comfortable, take the next step. Even if your investment horizon is small, just a few months or a couple of years, in that case, there are short-term funds, mutual funds, liquid funds, ultra short-term funds. So आप उसमें भी डाल सकते हैं पैसे, and they give a little bit better return most of the times compared to FD. तो अगर आप पार्क करना चाहते हो अपने पैसे for a few months or something like that, तो आप liquid funds में भी पैसे डाल सकते हो. जैसे मैंने बोला था एनपीएस का every month I get statement. So recently when market went up, this was my return in NPS. So for the selected period, I got like almost close to 40%, and overall till date, I've got almost close to 10-11%. So every month I get this thing, and you can check based on this statement if you want to make any changes or you want to keep it as it is. Uh, Also, I receive my statement every quarter from NSDL. All my investments, my mutual funds, my shares, everything. I receive a consolidated statement for that. So if you are not receiving, then you can go and check your settings there also. सो अर्लियर ऐसा होता था कि अगर आपने 5 म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं और 10 शेयर्स में पैसे डाले तो आपको उस अकाउंट में जाके चेक करना पड़ता था. बट सिंस लास्ट फ्यू इयर्स I get a consolidated statement which comprises of all my investments, और वहां पे पूरा लाइक वे कितना रिटर्न मिला है ओवर द इयर्स, कौन से शेयर्स में, कौन से म्यूचुअल फंड में, हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग, इज इट इन प्लस और माइनस. एवरी मंथ का लास्ट एक साल का वो परफॉर्मेंस वहां पे दिखाता है. पूरा आपका जो पोर्टफोलियो है उसका भी, और जो आपके इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स हैं उसका भी. तो आई थिंक अभी तो डूइंग इन्वेस्टमेंट हैज बिकम मच मच इजियर, बिकॉज आपको वहीं पे सारा सब दिख जाता है ऑनलाइन ही. अगर आप आपके डीमेट अकाउंट में भी जाके देखते हो, आई हैव अगेन आईसीआईसीआई डीमेट, तो वहां जाके मुझे सारे शेयर्स का हर एक का परफॉर्मेंस दिखता है कि मुझे हर एक शेयर में कितना रिटर्न मिला है फ्रॉम द डे आई इन्वेस्टेड टिल नाउ, and whether it is per year का return कितना है, and whether it is something that is performing well or not, वो भी वहीं पे दिख जाता है. So you can see all of these details in your Demat as well. But I also get statement in my email account every quarter where I can see all of this. So if you are not getting, check if you are getting it. थोड़ा बहुत every quarter या every few months or every few weeks you can keep a check. It's not that difficult, and जितना effort हम money कमाने में लगाते हैं उस हिसाब से it's not that great effort. एक बार अगर आप ये सीख जाओगे, and if your money is starting to earn for you, तो आपको एक
like it's not a continuous effort. You don't have to put daily so many hours. And yet, if you see, last quarter I've got really good returns. अगर इस quarter में मैंने जो भी returns पैसे invest किए हैं, I've got a very good return for that. So there was one mutual fund Medcap का, जिसमें मैंने पैसे डाले थे, and I got 70%, 700, like 700 परसेंट, मतलब 7 times returns. तो अगर मैंने 10,000 डाले थे, तो within 7-8 years I got 70,000. So there are times when you get really good returns. अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हो, तो जैसे वॉरेन बफेट और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो they just invest into right funds and right companies, and they are earning very very well. So let your money earn for you. Once in 2010 मैंने सिल्वर में पैसे डाले थे, और सिल्वर का तभी रेट somewhere between 15 to 17,000 था, and within a year it crossed 60,000. So imagine in a year 15,000 से 60,000, 4 times. So it's so much worth to put your efforts from time to time, but don't take too much risk. Take one step at a time, go slow, figure out what you're doing. Don't go for those options जहाँ पे किसी ग्रुप में आपने ज्वाइन कर लिया और वो बोलते हैं ये शेयर्स आज ऊपर जाने वाला है, 15 दिन के लिए, महीने के लिए डालो, because you don't know how reliable that information is. And just like शेयर मार्केट बहुत सारा स्पेकुलेशन पे भी चलता है. So long term, you know that companies which are performing well are going to give you good returns. But short term के लिए share market is like थोड़ा बहुत जुगाड़ टाइप या थोड़ा बहुत वैसे टाइप की, you are just like assume, there are predictions कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. Suddenly अगर 100 लोगों या 500 लोगों का ग्रुप है, वो एक शेयर खरीदता है, तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है when everybody sells. So figure out कि सच में लॉन्ग टर्म के लिए कौन से शेयर्स और फंड्स अच्छे हैं, एंड डोंट ट्राई टू get into these short term things. At least I personally don't prefer doing that. Long term के हिसाब से whatever I'm guiding is from the long term aspect कि these things will work really well. So I don't necessarily put too much effort into such things. This is my tier 2 का statement, recent वाला. And in tier 2, whatever money I've put, I've got 12% till date. And in the last quarter, whatever I've put money for the selected, this period, I've got 43% return. So, you don't have to go for this gimmicks and all that. At least I personally feel that way, that this is a safer option, and I'm getting good returns here. So why bother? The last option, last week, last session when we discussed about gold bonds. So अभी कल gold bonds आने वाले हैं. They are going to be open for subscription for 4 days, and these bonds are guaranteed by Government of India. अभी उसका price, like you can see in the message that I put in group, it's somewhere close to almost like 5,900 or something. And additionally आपको 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम गोल्ड का जो भी रेट है उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, बट इररिलेटिव ऑफ दैट आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा. You don't have to worry about risk and cost of storage. And आपको जैसे भी पसंद हो ये बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो, डीमैट, नॉट डीमैट, whichever way, through your bank or through your demat, or whatever, like whichever way is comfortable for you, you can go for it. And normally 8 साल के लिए होता है इसका पीरियड, बट आप शेयर मार्केट में भी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे भी आप इसको सेल कर सकते हो.
So if you want to exit and you have a crunch of money, then you can do that as well. All the rest of the details are there in the message. I'm not asking you to go for any particular bank or any particular fund. I'm here just sharing the information. You make your own choices. Um, and when I am investing, I invest through ICICI Bank. So I just mentioned these options. उनके ऐप में भी ऐप से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उनके वेबसाइट से भी कर सकते हो. So whichever way, whatever suits you, go for it. So anybody has any questions or anything that they want to discuss or any topics for the next time, then we can take up. Rimple, you mentioned a group, but which is that group? Where is the link to join? So Samir Purohit karke, I have a friend. He's also part of the group. आप बस उसको tag करके बोल दो कि add me to your finance group and he will add you. You can also ask him, to share the previous information because he has this community since almost, I think 2015 maybe had, this community had started. I'm part of it since 2015, I think. So there's a lot of information that he has shared. Mediclaim, insurance policies, everything, whatever, anything to do with, finance, tax, investments. He has been sharing information. तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि बाबा आप joined newly, so he can probably guide you where all the earlier um, earlier options or information is available. He used to share it on social media as well, so he can probably guide you about that. समीर पुरोहित है, मैं फिर से उसका नंबर डालती हूँ चाहिए तो, या उसको टैग करती हूँ group में. So you, any of you who want to join his group can just ask him वहाँ पे group में या personally कि add me to your group. So all this information which I have shared, उसकी जो specifics है, whether it is NPS or any other option, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा. Here I'm just like, in brief mentioning it. I'm not getting into too much detail. But there are so many other aspects कि जब आप अभी जैसे for example Mediclaim, there are few companies which give you option to continue that Mediclaim on your personal level even when you leave the company. So I work with Persistent Systems. तो जब मैंने छोड़ा तब मैंने उनको बोला था कि I want to continue this Mediclaim. They gave me that option and it's a very good policy. And when it's a corporate policy, you get a lot of advantages. Pre-existing diseases are covered. The claim is easier. The service is great. So you can continue with that Mediclaim on personal level. कौन सा Mediclaim लेना चाहिए, कितना amount होना चाहिए, insurance policies कौन सी लेनी चाहिए. So we discuss all of this, like top performing mutual funds, insurance policies, what are the pros and cons. We normally suggest कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हो तो सिर्फ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसमें रिटर्न नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों लेने चाहते हो ना, तो आपको इंश्योरेंस भी बहुत कम मिलता है, इन्वेस्ट और रिटर्न्स भी बहुत कम मिलते हैं. उससे अच्छा है कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आप टर्म इंश्योरेंस लो और अच्छा अमाउंट लो, टेक कंसिडरेबल अमाउंट एंड गो फॉर इट. इन दैट केस जो प्रीमियम आता है वो बहुत हाई नहीं होता है टर्म इंश्योरेंस में. बट अगर आप दोनों कंबाइन करने चाहते हो तो इफ यू रियली चेक मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज व्हिच कंबाइन बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, उनके रिटर्न बहुत लो होते हैं. सो वी डोंट नेसेसरीली opt for those, and we don't recommend opting for those. And so all this information as a group of people we discuss in that group, and we share our ideas, our questions, everything. So it's but then like I said, all are professional people, not experts.
So you have to use your discretion. You have to search a little more on your own, and you have to do it. Regarding this SGB, is there any talk of gold prices going down? Not immediately, but coming few months that way. क्योंकि I अगर गोल्ड actually प्राइसेस heard, डाउन होती है तो फिर ये बॉन्ड भी तो लॉस में जाएगा ना. of course. बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखते हो तो गोल्ड का परसेंटेज बहुत कम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड किया जाता है. डोंट पुट टू मच मनी इन गोल्ड is what is recommended, but as you know, maybe a small percentage of your investment can be routed to gold. It can be one of the egg in your basket, but at the same time, abhi recently what I heard from some people was the prediction is that is साल gold और silver ऊपर जाएगा. Last week there was a electronically traded fund silver का भी आया हुआ था, and some people did recommend it कि it's a very risky metal silver. ये silver का जो up and down है दोनों बहुत बड़ा होता है. उसका जो ऊपर जाता है वो भी like in 2010, like I mentioned, जब वो 60,000 चला गया, I got out of it because I thought कि मैंने इतना अच्छा रिटर्न कमा लिया है, वो इससे ज्यादा मैं क्या ही कमाऊंगी. So when I invested at 15-17,000, I got out at 60,000, and I thought it was a smart decision. And the prediction I have been hearing past few days is that this year uh, the metal is going to go up, gold and silver, but we all have to do our own research, and I'm yet to do a little more research on that. But I am planning to buy gold bonds. Maybe not too much amount, but yeah, I will. And buying And silver as in you bought in the commodity market or earlier there were no options, no. 2010 there were no options, so I did invest in physical gold and silver at that point of time. But since then I've slowly been trying to shift to digital. So मैं धीरे धीरे I'm putting more money into ETF for gold and silver, or that's why I said I'll be also buying gold bonds. But yeah, I'm slowly shifting for investment purpose. I'm slowly shifting from physical gold to digital gold. Okay. So for joining the group, you have to ping to Samir, and there's no link, right, to join. No, ask him if he is willing to share the link. Normally, he doesn't share the link. He rather prefers to, connect one to one, or at least, like once a person requests, then he allows them. No, he adds them to the group. I think last I heard there were 2,000 people in that group. But yeah, I mean, you can ask him. It's his call. Sure. And you can ask him कि हम as a group अगर हाँ यहाँ से few people want to join together, then ask him कि हम सबको past का जो भी information है, can you share that as well. Okay. So what I can also do is maybe I'll share some of these messages in the group that I mentioned few of these things, and you guys can maybe read it and explore it further. So maybe I'll share that, and do share your feedback. So I guess that's all I had in mind for today. If anybody doesn't have questions, then we can close it for the day.
Okay, thank you everybody for joining. I hope this helps you. Yeah, thanks a lot. Okay, great. Yeah, excuse me. Huh? Will you be sharing the recording of this today's Oh, session? yeah, I will share it in the group. Once, maybe today evening or by tomorrow. Okay, fine, thank you. I have not been able to join on time, so couldn't Sure. really attend it. Okay, thank you. Sure. Okay. शशि जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना इसका स्वीपिंग का, तो आपका हुआ क्या? हाय रिम्पल, आपने पहचाना? Hi. मैं बैंगलोर में मिली थी। आप वीडियो ऑन कर दोगे तो मैं पहचान लूंगी। मैं वीडियो ऑन कर चुकी हूँ। Is it? One second. Let me go to gallery view in that case because I can't see you. Oh, hi Shashi ji. Yes. मैं तो वीडियो शुरू से ही ऑन करा हुआ है। अभी मतलब अभी मैंने ज्वाइन किया, मेरे माइंड से एकदम स्लिप हो गया था कि आपका सेशन। तो आज का मेरा Okay. सारा ही मिस हो Maybe गया। आप रिकॉर्डिंग दे देना मुझे। मैं अगली बार ग्रुप में एक दिन चलेगा। मैं अगली बार ग्रुप में एक दिन पहले फिर से डाल दूंगी। Even I got occupied with few things and इतना तैयारी था नहीं सेशन का, तो मैंने ज्यादा कहीं पे किसी को डाला भी नहीं है अभी तक। तो next time I'll probably put more messages in the group, तो लोगों को याद रहेगा। And I'll check the settings. मुझे आज किसी के भी वीडियोस नहीं दिखे, so I'll check the settings of the Zoom. तो आपका स्वीप इन का हुआ क्या? वो बैंक ऑफ वो जो बड़ौदा में sweep in एचडीएफसी में नहीं है, एचडीएफसी में नहीं है। नहीं है। नहीं, सेम बट फैसिलिटी नहीं। एचडीएफसी के वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है स्वीप इन एफडी का। लिखा हुआ है, लेकिन वो ये ऑप्शन वो नहीं है जो आपने बताया था। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी परचेज के लिए जाते हो और आपका कुछ अमाउंट कम हो जाता है, तो वो आपकी एफडी में से विड्रॉ करके वहां डाल देंगे और आपके वो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उसमें। इस तरह का कुछ है, वो नहीं है जो नहीं, आई रेड। आप नहीं, मैंने एचडीएफसी के वेबसाइट पे देखा, तो एचडीएफसी के वेबसाइट पे ऐसे लिखा था कि आई थिंक 10,000 था अमाउंट आपके अकाउंट में रहना चाहिए। उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है वो ऑटो एफडी में आप डाल सकते हो, फ्लेक्सिबल एफडी में। और जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो पैसे ऑटोमेटिक वहां से ले लेगा। और अगर डिपेंडिंग अपॉन आपने समझो वहां पे 2 महीने रखे पैसे या 15 दिन रखे या 6 महीने रखे, उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपके पैसे वहां पे 1 साल रहे तो आपको 1 साल वाला जो एफडी का रेट होता है ना वो मिलेगा। अगर आपने 6 महीने रखा तो 6 महीने का जो एफडी का रेट होता है ना उसके इक्विवेलेंट रेट मिलेगा। तो हर बार आपको 8% नहीं मिलेगा। समझो आपने 5 महीने रखा और 5 महीने के लिए समझो आपके बैंक का समझो 5.5% था इंटरेस्ट, तो आपको वो मिलेगा। एंड प्लस उसमें मैंने और भी डिटेल्स चेक किए कि जैसे आईसीआईसीआई 5,000 का एफडी बनाता है, मोर देन 5,000। 5,000 से नीचे का नहीं बनाते हैं वो लोग। अगर 12,000 होगा तो वो नहीं बनाएगा एफडी। 15,000 है तो वो 5,000 का एफडी बना देगा। पर एचडीएफसी का मैंने देखा वो तो छोटे अमाउंट का भी एफडी बनाता है। तो वो सब तो उनके वेबसाइट पे है, तो वो होना चाहिए। मतलब या 10,000 तो आपका के ऊपर आपका जितना भी अमाउंट होगा वो आपका बनाएगा। हाँ, ये स्वीपिन ऑटो स्वीपिन फैसिलिटी या तो देगा। आपको खुद को बनाना पड़ेगा। मैंने आज के सेशन में स्टार्ट में बोला कि कुछ कुछ बैंक जैसे आईसीआईसीआई ने, मैंने बीच में ऐसे सुना था कि ये जो ऑप्शन था मेरा, कि वो हर बार मैं जैसे ही पैसे उसमें डालती हूँ वो एफडी बना लेता है, वो ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया है, ऐसा मैंने किसी से सुना था। तो वो ऑप्शन पहले था, जिन्होंने ले लिया, पर अभी वो नहीं दे रहे। तो अभी आपको खुद को जाके फ्लेक्सिबल एफडी बनाना पड़ता है। पर वो ऑप्शन मैंने एचडीएफसी के वेबसाइट पे देखा था और आईसीआईसीआई में भी अभी भी दिख रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग कि जब ऑप्शन तो होना एचडीएफसी चाहिए। में हम खुद से जाके वो ऑटो स्वीपिन ये हाँ, करके एफडी खुद बना ले, एफडी हाँ, बना के हाँ। और ऑटो तो जब भी आप पैसे, हाँ, तो अच्छा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपको। जब मैं सिलेक्ट करती हूँ ना तो वहां पे एक होता है एफडी और एक आता है फ्लेक्सिबल एफडी। तो ठीक उनके है। वेबसाइट पे फ्लेक्सिबल एफडी के भी अलग से रेट दिए हुए हैं आईसीआईसीआई के, कि एफडी का ये रेट है और फ्लेक्सिबल एफडी का ये रेट है। और आपको अगर समझो मुझे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का बनाना है, तो फिर मैं वो भी जाके वहां पे बना लेती हूँ फ्लेक्सिबल वाला। कि चलो मुझे लाइक वो ऐसा भी करते हैं कि 390 डेज का अगर आपने बनाया एफडी, तो उसको एक्स्ट्रा ये मिलता है,
इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर आपका 5 महीने का है तो उसको ये रेट मिलेगा। सो 390 डेज के लिए दे यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा 0.5%। तो मैं कभी कभी जाके वहां पे 390 डेज का एफडी भी बनाती थी। बट माई पॉइंट इज कि वहां पे नॉर्मली उनके वेबसाइट पे ना फ्लेक्सिबल एफडी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है और उसका ड्यूरेशन और बाकी डिटेल्स होते हैं। और मैंने थोड़े दिन पहले चेक किया था, तो एचडीएफसी के बैंक पे आई रेड ऑल दीज थिंग्स। सो आई एम होपिंग कि आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। वो आपको बताए या ना बताए वो अलग चीज है, आप जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा। और आजकल तो अभी एप्लीकेशंस और ऐप अच्छे होते हैं, वेबसाइट्स और ऐप, तो आप थोड़ा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू यू सो वेलकम। मच। ग्रेट। सो आप हमें भी अपडेट करना जो भी आपका फाइंडिंग होगा। राइट, सो अब That will बैंगलोर की help मीटिंग others. क्या है? 3 रिट्रीट और आ रही है। मैं अक्टूबर वाले में आने वाली हूँ, आप आने वाले हो? अक्टूबर वाले में आ रहे हो आप? वाह, चलो लेट्स सी, अभी तो मैंने पक्का नहीं किया कुछ, देखते हैं। अच्छा, अभी 4 दिन के लिए क्या आना, तो मैंने 9 सोचा डेज, हाँ कुछ मिनिमम 7 डेज तो होने चाहिए, तभी आता है मजा आता है। एटलीस्ट 5-6 दिन तो होने चाहिए एटलीस्ट इतना। और आप कहाँ से हो? दिल्ली से। हाँ, तो फिर हम पूना और दिल्ली से जाएंगे ऑल द वे वहां पे, तो 5-6 दिन तो चाहिए ना कम से कम। हाँ सो आई एम थिंकिंग ऑफ अक्टूबर, लेट्स सी। अभी फाइनली कुछ डिसाइड मेरा भी नहीं है, आई थिंक अगले महीने डिसाइड होगा। ठीक है, मुझे तो भी अपना ऐसा ही लग रहा है, ग्रुप जाओ में तो डाल देना जो सही। भी, हाँ हाँ श्योर, ठीक। वैसे बहुत अच्छा वो भी ट्रिप जो अपना, बहुत आई हैड सो मच फन एंड इट वाज ग्रेट मीटिंग ऑल यू पीपल। या चलो, वहाँ पर लेट सारे अस ही नो लोग- आप जो भी। हाँ, ठीक है, राइट। आप सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, मैं ऐसा ऐसे कुछ नहीं बोल रही थी, मैं कहती थी सभी लोग वहाँ पे जो भी मिले सभी बहुत अच्छे थे और सबके साथ ही बहुत बॉन्डिंग हो गई, बहुत आई थिंक इंजॉय। वहाँ का एनवायरमेंट ही कुछ अलग था, ऐसा लगा था कोई दूसरी दुनिया है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। वापस आने के बाद भी ऐसे लग रहा था हैंगओवर है वहां का कुछ दिन तक। हाँ हाँ, और मेरी तो हेल्थ अच्छी हो गई वहां जाके। मेरी तो बहुत अच्छी हो गई। आई थिंक देयर इज अ ग्लो ऑन फेसेस ऑफ पीपल, जो भी वहां पे मिले थे सबके फेस पे ग्लो है। मेरे ना हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा था जब मैं गई थी यहाँ से, पता है आपको? अच्छा, मैं 2-3 बार सोचा कि जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा डाउट कर रहे थे कि मैं कैंसिल करवाऊं क्या। मैंने कहा नहीं, कैंसिल तो नहीं करवाना, तो कैंसिलेशन की तो नहीं, लेकिन मेरी उस आई तबीयत एम उस दिन ग्लैड। बहुत खराब थी। जिस दिन मैं आई हूँ वहां पहुंची हूँ ना, उस दिन बहुत खराब थी, लेकिन विद इन 2 डेज आई वॉज परफेक्टली फाइन। मतलब वहां कुछ मैजिक है। आई सीरियसली वहां ऐसे लग रहा था कुछ मैजिक है। इतनी सारी चीजें वहां जाके ब्रेकडाउन में से ब्रेक थ्रू कन्वर्ट हो गया ना, जहां पे भी, चाहे आपका रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, एंड एवरीबडी हैड सो मेनी ब्रेक थ्रूज टू शेयर इन द एंड। तो हाँ जो सच्ची में, चीजें मैं तो एंड बहुत में कहीं पे, मैंने हाँ एंड में एक्चुअली मेरे को हमने ना एक दिन बात की नहीं करवाई थी फ्लाइट, उसी दिन की 29 की करवाई थी, तो हम लोग 2 बजे निकल गए थे। तो मैंने वो एंड वाला सेशन हाँ नहीं अटेंड किया था जिसमें कि हम लोग अपने ब्रेक थ्रूज को शेयर कर रहे थे, हाँ। वो नहीं कर पाई थी, वरना मैं जरूर करती। पर श्रेयांश सर ने उसके बाद एक सेशन रखा था जहाँ पे यू कुड शेयर योर फीडबैक, तो वो वहां पे आप मतलब, और उनके जो लाइव सेशन है वहां पे आप शेयर कर सकते हो ब्रेक थ्रू अभी भी। हाँ वो तो मैंने सर को तो वैसे तो बता दिया ऑप्शन, क्योंकि उनके बहुत सारे लाइव सेशन मैंने अटेंड किया है ना, अभी पेरेंटिंग का हाँ हुआ था, और वैसे भी हाँ सर आते रहते हैं मेडिटेशन से पहले, तो मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की सबके साथ। हाँ। क्या, बहुत, ओ आई मिस्ड इट, आई हाँ मिस्ड इट, हाँ, आई बी वो मोर। सर ने ना जब हमारा रिट्रीट खत्म हुआ था उसके बाद स्पेशली अप्रैल रिट्रीट वाले लोगों के लिए भी एक सेशन रखा था 2 घंटे। हाँ हाँ। अच्छा, आपने उसमें वहां तो पे आप थे शेयर ना, किया था क्या? उसमें तो आप थे। हाँ मैं हाँ मैं थी, पर मे बी फिर आई मिस्ड मे बी सम पार्ट ऑफ इट। क्या हाँ हो होता है ना, सकता पता नहीं होता कि 2 घंटे चलेगा सेशन, हम अपने आप को शेड्यूल करते 1 घंटे के लिए और वो 2 घंटे तक चला जाता है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना। है। तो हाँ पूरा राइट, 100% ध्यान नहीं होता है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो। बिल्कुल। बट अमेजिंग था वो सेशन, सीरियसली, मतलब वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था। और बहुत चीजें जहाँ पे अटके होते हैं ना, हेल्थ बोलो या रिलेशनशिप या जो भी है,
वो सब वहां से फटाफट गाड़ी आगे भागी है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। वहां पर जाके थिंकिंग ही एकदम चेंज होगी। मेरा तो बताऊं क्या, वो उस दिन मैं इतना ज्यादा एक्चुअली मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था, मेरा पेट बहुत अपसेट था, बड़े दिनों अच्छा। से नहीं खाया जा रहा था। तो हाँ। वहां जाके जब मैंने सर के साथ सर से पूछा, मैंने कहा सर आई एम नॉट एबल टू ईट समथिंग, तो मैं मेरा जाते ही मैंने सब सब क्वेश्चंस पूछे थे, फोटो वोटो खिंचाने के बाद